बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज की लेक्चर वीडियो वो रिलेटेड है कि एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर जो है वो आप कहेंगे ये टर्म्स यूज़ होती हैं जो मोस्टली स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज होते हैं इन टर्म्स को समझने में और इस्तेमाल करने में। तो आज हम समझेंगे कि क्या है, किस तरह हम एनालिसिस क्या है और डिटर्मिनेशंस और मेजरमेंट के दरमियान क्या डिफरेंस है। इसके अलावा टेक्निक्स को डिफाइन करेंगे, मेथड्स को समझेंगे, प्रोसीजर्स क्या को किस तरह डिफाइन किया जाता है, प्रोटोकॉल्स क्या हैं, और इसके अलावा क्लासिफाइंग एनालिटिकल टेक्निक्स, सिलेक्टिंग एनालिटिकल मेथड्स और डेवलपिंग द प्रोसीजर और प्रोटोकॉल से रिलेटेड बेसिक्स टर्मिनोलॉजीज को इस जो है आपके चैप्टर के थ्रू हम क्या करेंगे, इनको क्लैरिफाई करेंगे। तो सबसे पहले जो है जो अगर हम देखें इसमें एनालिसिस है, the first important distinction we will make is among the terms analysis, determination and measurement। तो ये एनालिसिस, डिटर्मिनेशन और मेजरमेंट के दरमियान हम डिफरेंस कि क्या है इनमें डिफरेंस। एंड एनालिसिस प्रोवाइड्स केमिकल और फिजिकल इंफॉर्मेशन अबाउट अ सैंपल। हम जब भी कोई एनालिसिस करते हैं एक्चुअली हमें फिजिकल केमिकल इंफॉर्मेशन हमें मिलती है सैंपल के बारे में। द कंपोनेंट ऑफ इंटरेस्ट इन द सैंपल इज कॉल्ड द एनालाइट। जो कंपोनेंट ऑफ इंटरेस्ट होता है सैंपल, हम उसको एनालाइट कहते हैं। एंड द रिमाइंडर ऑफ द सैंपल इज नोन एज द मैट्रिक्स। इन एनालिसिस वी डिटरमिन, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए डिटर्मिनेशन, वी डिटरमिन द आइडेंटिटी, कंसंट्रेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एन एनालाइट। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेशन है। टू मेक दिस डिटर्मिनेशन वी मेजर वन और मोर ऑफ द एनालाइट केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो हम किसी भी एनालाइट की आइडेंटिटी, कंसंट्रेशन या प्रॉपर्टीज को डिटरमिन करने के लिए हम किसी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, मेजर किया जाता है। हम यहाँ पे एक एग्जांपल इस चैप्टर में गिवन है। And an example clarify the difference between analysis, determination and measurement. In 1974, the federal government enacted the Safe Drinking Water Act to ensure the safety of public drinking supply. To comply with this act, municipality regularly monitor their drinking water supply for potentially harmful substances. On such substance, fecal coliform bacteria, municipal water department collect and analyze sample from their water sample. They determine the concentration of fecal coliform bacteria by passing a portion of water through a membrane filter, placing the filter in a dish containing nutrient broth and incubating for 22 to 24 hours at 45 to 5 temperature. At the end of the incubation period, they count the number of bacteria colonies in the dish and report the results as the number of colonies per 100 ml. Thus, municipal water department analyze sample, फिर water to determine the concentration of fecal coliform bacteria by measuring the number of bacterial colonies that form during the। अब आप इसमें देख रहे हैं कि किस तरह एनालिसिस, डिटर्मिनेशन और मेजरमेंट को क्या किया गया, डिफरेंशिएट किया गया। और इसमें ये आपके पास प्लेट है जिसमें नंबर ऑफ कॉलोनीज को क्या किया गया, एक सैंपल एनालाइज किया गया और इसमें आप फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया को डिटरमिन किया गया और मेजरमेंट किया गया नंबर ऑफ कॉलोनीज को। तो ये द बेसिक डिफरेंस है। आगे जो हमारे पास है टेक्निक्स। सपोज यू आर आस्क्ड टू डेवलप एन एनालिटिकल मेथड to determine the concentration of lead in drinking water. How would you approach this problem? To provide a structure for answering this question, let's draw a distinction between 4 levels of analytical methodology. Techniques को define करेंगे हम, क्या है methods क्या होते हैं, procedures and protocols. सबसे पहले technique is any chemical physical principle we can use to measure and analyze। ठीक है, कि कोई भी chemical physical principle है जिसमें हम क्या करते हैं, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, analyte को हम measure करते हैं। There are many techniques for determining the concentration of lead in drinking water. In graphite furnace atomic absorption spectroscopy, for example, हम क्या करते हैं कि first convert aqueous lead into a free atom state which is called atomization, then measure the amount of light absorbed by the free atom. Thus जो आपके पास ग्रेफाइट फर्नेस एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम यूज बोथ केमिकल प्रिंसिपल यानी कि एटमाइजेशन हो रही है, इसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है, और फिजिकल प्रिंसिपल एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। अब मेथड क्या है, मेथड इज द एप्लीकेशन ऑफ टेक्निक फॉर स्पेसिफिक एनालाइट इन अ स्पेसिफिक मैट्रिक्स। एज ग्रेफाइट फर्नेस मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ lead in water is different from that for lead in soil or blood। तो ये जो आपके पास वाटर के अंदर जो लेड की कंसंट्रेशन आपने डिटरमिन की है और जो मेथड जो है वो डिफरेंट होता है, वो अगर आपको कहा जाए कि आप सॉइल या ब्लड में लेड की कंसंट्रेशन को डिटरमिन करें।
A procedure is a set of written direction telling us how to apply a method to a particular sample, including the information on obtaining samples, handling interference, and validating results. A method may have several procedures as each analyte or agency adapts it to specific. As shown figure 3, आगे हम देखते हैं the American Public Health Safety (APHA) and the American Society of Testing Material ASTM separate procedure for determining the concentration of lead. ठीक है, तो ये आपके बाद आप टेक्निक्स को देख लें. दिस टेक्निक ग्रेफाइट फॉर एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी. फिर मेथड्स है जो इस टेक्निक्स का जो मेथड लेड इन सॉइल, लेड इन वाटर एंड लेड इन वाटर का क्या होगा, अलग अलग होगा. और डेफिनेट प्रोसीजर जो APH ASTM प्रोसीजर्स हैं, ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स आपको ये एजेंसीज प्रोवाइड करती हैं. जो इसके बाद आपके पास आता है प्रोटोकॉल्स होता है. प्रोटोकॉल्स को हम यूज करते हैं वहां पर कि अगर हमें कोई ऐसी एनालिसिस करनी है कि जिसके थ्रू जो है आप कहेंगे कोई पॉलिसी बनानी हो, तो इसके लिए EPA प्रोटोकॉल्स होते हैं. फर्दर हम इसको हम डिफाइन, ये फाइनली अ प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ stringent guidelines specifying a procedure that must follow if an agency is to accept the results. Protocols are common when the results of analysis support a defined public policy से related है, तो हम protocols को यूज करते हैं. When determining the concentration of lead in water under Safety Drinking Water Act, for example, labs must be used protocols specified by the EPA, Environmental Protection Agency. There is an obvious order to these 4 levels of analytical methodology. Ideally, a protocol uses a previously validated procedure. Before developing and validating a procedure, a method of analysis must be selected. This requires in turn an initial screening of available techniques to determine those that have the potential for monitoring the analyte. अब इसके बाद classifying analytical techniques. Analyzing sample generates a chemical physical signal that is proportional to the amount of analyte in the sample. This signal may be anything we can measure, such as mass or absorbance. It is convenient to divide analytical techniques into general classes depending on whether the signal is proportional to mass or moles of analyte or to the analyte concentration. ठीक है, तो इसमें moles या analyte, इसमें वो signal किसके directly proportional है. अब यहाँ पे अगर आप देखें, if a technique respond to the absolute amount of analyte in the sample, then the signal due to analyte SA is equal to, ये आपके पास फार्मूला इसमें, और Na is the number of moles of gram in the sample and K is the proportional constant. और इसके बाद आपके पास सेकंड में अगर है second class of technique के analytic technique are those that respond to the analyte concentration CA. तो यहाँ सिग्नल जो है वो इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन जो है द सेम कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर, देयर सिग्नल आइडेंटिकल सिग्नल. इसके बाद नेक्स्ट एनालिटिकल टेक्निक, अ टेक्निक रिस्पोंडिंग टू एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ एनालाइट इज अ टोटल एनालिसिस टेक्निक. To absolute amount of analyte इसको हम total analytical analysis technique कहते हैं. Mass and volume are those common signals for total analysis technique, and the corresponding techniques are gravimetry, gravimetry techniques है आपके पास, और and tachymetry techniques है. With few exceptions, the signal for a total analysis technique is the result of one or more chemical reactions involving the analyte. These reactions when involve यानी कि combine हो गए, any combination of precipitation, acid base completion and redox chemistry. The stoichiometry of the reactant determines the value of proportionally constant. अब next है हमारे पास इसमें spectroscopy and electrochemistry, in which an optical or electrical signal is proportional to the relative amount of analyte in a sample, are example of concentration techniques. The relation between the signal and the analyte concentration is a theoretical function that depends on experimental condition and the instrumentation used to measure the signal. For this reason, the value K must be determined experimentally. तो इसमें हम देखते हैं कि अगर सिंगल कर्व मेथड, कैलिब्रेशन कर्व मेथड हम यूज करते हैं, तो वहाँ प्रोपोर्शनल कांस्टेंट की वैल्यूज को हम क्या करते हैं जो है वो डिटरमिन किया जाता है. इसके बाद ये आपके पास सिलेक्टिंग एन एनालिटिकल मेथड. A method is the application of technique to a specific analyte in a specific mixture. We can develop an analytical method for determining the concentration of lead in drinking water using any of technique mentioned. जो हम पहले पढ़ चुके, a gravimetric method might precipitate the lead as lead sulfate or lead chromate and use the precipitate's mass as the analytical signal. Lead forms several soluble complexes which can use to design a complexation tachymetric method. As we can use graphite from the atomic spectroscopy to determine the concentration of drinking water. Finally, the availability of multiple oxidation state of lead makes electrochemical methods feasible. The requirement of
The requirements of the analysis determine the best method. In choosing a method, consideration is given to most some or of following design. इसमें चेक किया जाता है कौन सा मैथड इस्तेमाल की, उसकी एक्यूरेसी कितनी, प्रिसिशन कितनी, और उसके बाद सेंसिटिविटी, सिलेक्टिविटी, रोबस्टनेस, रेजोनेंस एंड स्केल ऑफ ऑपरेशन, एनालिसिस टाइम, अवेलेबिलिटी एंड इक्विपमेंट एंड कॉस्ट. ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी मेथड को सिलेक्ट करने में, एनालिसिस में. अब हमारे पास टर्म है एक्यूरेसी. हाउ क्लोजली द रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट एग्रीज विद द ट्रू और एक्सपेक्टेड रिजल्ट. और इसमें आपके पास ऑब्टेन रिजल्ट है आपके पास और एन एक्सपेक्टेड रिजल्ट है. इसके अलावा आप परसेंटेज रिलेटिव एरर जो है ये मोस्टली जो है वो कैलकुलेट करने को कहा जाता है. ऑब्टेन रिजल्ट है आपके पास, एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, ये वैल्यूज उसको डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रिजल्ट 100 और मल्टीप्लाई 100% रिलेटिव रिजल्ट आपके पास आ जाता है इसमें. अब method accuracy depend on many things, including the signal source, the value of Ka, and the ease of handling sample without loss or contamination. In general, methods relying on to the total analysis technique such as gravimetry and tachymetry procedure results of the higher accuracy because we can measure mass and volume with high accuracy because the value of K is known exactly through stoichiometry. तो इसमें ये कह रहे हैं कि जो आपके पास ग्रेविमेट्री एंड टोटल एनालिसिस टेक्निक्स लाइक ग्रेविमेट्री और आपके पास टाइट्रोमेट्री, ये आपको रिजल्ट्स जो है इनकी एक्यूरेसी क्या होती है, ज्यादा होती है, क्योंकि आप प्रोपोर्शनल कांस्टेंट की वैल्यूज आपको स्टोइचोमेट्री से नोन होती है. ठीक है, ये आपके पास कुछ है टू डिटरमिनेशंस ऑफ पोटेशियम कंसंट्रेशन सीरम शोइंग द इफेक्ट ऑफ प्रिसिशन ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल रिजल्ट. द डाटा आर लेस स्कैटर्ड, इसमें डाटा ज्यादा स्कैटर्ड है. ठीक है, इसमें रिजल्ट ज्यादा, इसमें अगर आप देखें डाटा ज्यादा स्कैटर्ड है और यहाँ पे क्या है ये लेस, ये प्रिसाइज रिजल्ट है और इसमें प्रिसाइज रिजल्ट लो प्रिसिशन है. प्रिसिशन अगर हम देखें इसमें आपके पास when a sample is analyzed several times, the individual results are rarely the same. Instead, the results are randomly scattered. Precision is a measure of this variability. The closer the agreement between individual analysis, the more precise the result. For example, in determining the concentration of potassium in serum, the results shown in figure 3.4 are more precise than those in figure 3.4. तो अगर आप देखें इसमें कि ये जो रिजल्ट है आपके पास ये ज्यादा प्रिसाइज है एज कम्पेयर टू बी के. बी में जो रिजल्ट है ये ज्यादा स्कैटर्ड है. फर्दर इसमें आप देखें मेथड प्रिसिशन डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर इंक्लूडिंग द अनसर्टेनिटी इन मेजरिंग द सिग्नल एंड द ईज ऑफ हैंडलिंग सैंपल प्रोसीजर. इन मोस्ट केसेस वी कैन मेजर द सिग्नल फॉर अ टोटल एनालिसिस मेथड विद हायर प्रिसिशन देन द करस्पॉन्डिंग सिग्नल फॉर अ कंसंट्रेशन मेथड. प्रिसिशन इज कवर्ड इन, ठीक है, फर्दर चैप्टर 4 में इसको डिस्कस किया. अब सेंसिटिविटी, हाउ डू वी डिफाइन द एबिलिटी टू डेमोंस्ट्रेट दैट टू सैंपल हैव डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ एनालाइज इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ मेनी एनालिसिस. अ मेथड सेंसिटिविटी इज अ मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू एस्टैब्लिश दैट such differences are significant. Sensitivity is often confused with a method detection limit, which is the smallest amount of analyte that we can determine with confidence. तो आपके पास ये sensitivity is equivalent to the proportional constant. Further equation, if change in signal is the smaller difference that we can measure between two signals, then the smallest detectable difference in the absolute amount or relative amount of analyte is. तो ये आपके पास जो मैथमेटिकली है, तो ये आपके पास चेंज इन, अगर फर्स्ट में मोड्स चेंज हो रहे हैं तो क्या हो रहा है, सिग्नल भी चेंज हो रही है और कंसंट्रेशन चेंज हो रही है तो सिग्नल चेंज हो रहा है. सपोज फॉर एग्जांपल दैट ओवर एनालिटिकल सिग्नल इज मेजरमेंट ऑफ मास यूजिंग अ बैलेंस हुज स्मॉलेस्ट डिटेक्टेड इंक्रीमेंट जो है ये जो आप कहेंगे मिनिमम वैल्यू हम मेजर कर सकते हैं एनालिटिकल. इफ ओवर मेथड सेंसिटिविटी इज 0.200 देन ओवर मेथड कैन बी कंसीवली डिटेक्ट अ डिफरेंस इन मास ऑफ एज लीटर. ये आपके पास डिफरेंस है, ठीक है, 0.01 डिवाइडेड बाय आपके पास मेथड सेंसिटिविटी 0.2 से डिवाइड किया तो 0.005 ग्राम है. For two methods with the same signal का जो difference है, the method with the greater sensitivity, the larger proportional possibility is better able to discriminate between smaller amounts of analyte. फिर इसके बाद स्पेसिफिसिटी क्या है, इसमें आप देखेंगे an analytical method is specific if its signal depends only on the analyte. Although specificity is ideal, few analytic methods are completely free from the influence of interfering species. When an interference contribute to the signal, we expand equation 1 3. जो फर्दर इक्वेशंस थी उसमें आपने क्या किया कि ये आपके पास देखिए ये एनालाइट का सिग्नल है, ऐसे एनालाइट सिग्नल है और ये सिग्नल जो है आपके पास कोई इंटरफेरेंसेस है, तो इसकी वजह से आपने क्या किया ये n नंबर ऑफ मोड्स ऑफ इंटरफेरेंस है और C1 है. फर्दर इसकी डिस्क्रिप्शन भी यहाँ बताइए. S1 is the interference contribution to the signal, K1 is the interference sensitivity, and N1 and C1 are the modes of in consideration of the interferent in the sample.
और सेंसिटिविटी क्या, स्पेसिफिक सिलेक्टिविटी इज अ मेजर ऑफ मेथड फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस। द सिलेक्टिविटी ऑफ अ मेथड फॉर इंटरफेरेंस रिलेटेड टू द एनालाइट इज डिटरमाइंड बाय सिलेक्टिविटी कोएफिशिएंट। ये सिलेक्टिविटी कोएफिशिएंट है आपके पास, यानी ये सिलेक्टिव कोएफिशिएंट इसमें आपके पास देखिए एनालाइट का कंट्रीब्यूशन भी है और इसमें इंटरफेरेंट का भी कंट्रीब्यूशन है आपके पास, और ये है K1 और Ka, यानी कि इंटरफेरेंट प्रोपोर्शनल कांस्टेंट डिवाइडेड बाय द एनालाइट प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और इसमें आपके पास which may be positive or negative depending on the signal of K1 and K. The selectivity coefficient is greater than +1 or less than -1 when the method is more selective for the interference than for the analyte. तो ये वैल्यूज चेंज होंगी डेफिनेटली अगर सिलेक्टिविटी जो कोएफिशिएंट है उसकी वैल्यू चेंज डिपेंड करेगी कि जो मेथड है वो कितना आपके पास जो है वो सिलेक्टिव है किसी इंटरफेरेंट के लिए। Further, determining the selective coefficient value is easy if we already know the value of K or K1. We also can determine K by measuring sample in the presence of and in the absence of the interferent. ये भी एक तरीका आपके पास कि आप क्या कर सकते हैं, सिग्नल K की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं अगर आप सैंपल को एनालाइज करें इसकी प्रेजेंस में और इन एब्सेंस ऑफ इंटरफेरेंट। ये न्यूमेरिकल्स है इसमें। फिर आपसे जो जो टर्म्स हैं रोबस्टनेस एंड रेजिस्टेंस के, फॉर अ मेथड टू बी यूजफुल इट मस्ट प्रोवाइड रिलायबल रिजल्ट्स। ठीक है, अब मेथड जो है हम कहते हैं वो मेथड है जो कि रिलायबल रिजल्ट्स आपको प्रोवाइड। अनफॉर्चुनेटली मेथड्स आर subject to variety of chemical physical interferences that contribute uncertainty to energetic error आता है। When a method is relatively free from chemical interference, we can use it on many analyte in a wide variety of sample matrices. Such methods are considered robust. क्योंकि ये मेथड जो robust है कि आप एक एनालाइट की कई matrices के अंदर आप उसकी एनालिसिस कर सकते हैं। Random variations in experimental condition also introduce uncertainty. If a method sensitivity is too dependent on experimental condition, such temperature, acidity, or reaction time, then a slight change in the and any of these conditions may give us significantly different results. A rushed जो है method is relatively insensitive to change in experimental condition. हम कहते हैं एक method rushed है कि वो जो external condition के change होने पर जो method की sensitivity वो change नहीं हो रही। तो ये basics जो है terms हैं, इनको आप समझे क्योंकि ये अक्सर ये टर्म्स जो है वो आपसे पूछी जाती हैं और जो है ये आपसे इंटरव्यूज में पूछी जाते हैं और एमसीक्यूज के अंदर भी ये इस तरह के टर्म्स आपके पास जो है वो आती हैं। अपनी तो याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।